Last time हमने AP करा था, and I think I started GP also. Just gave the definition. आगे क्वेश्चन नहीं हुए थे. चलेगा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर बातें करेंगे. Find the number of terms common to the two APs 3, 7, 11, 407 and 2, 9, 16, 709. Ma'am, is the answer 14? मैम नहीं है सर. अब ये होगा ना, देखा नहीं. वो 20 से ज़्यादा है. आंसर याद नहीं है, सीरियस. Sir, is the आंसर याद नहीं है मुझे, सीरियसली इसमें. 17 is 17. एंड डोंट गिव मी आंसर. चुपचाप बैठो. अदरवाइज क्या होता है, फिर जो बच्चे फाइट कर रहे क्वेश्चन से, या तो गिव अप कर देते हैं, या अगर वो मिस्टेक करने वाले तो उससे पहले अलर्ट रहते हैं कि आंसर तो यही आने वाला रहता है. तो जो लोग भी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, इट्स रियली गुड, बट लेट एवरीबॉडी लर्न. Yes. Let others learn, have some mercy on others, so that others try the question with full vigor, है ना? ऐसे मजा खराब हो जाता है क्वेश्चन. आप आंसर ले आए, बहुत अच्छी बात. Don't start shouting, इससे तो क्लास का माहौल खराब होता है. I don't like this. मुझे लगता है कोई ऑप्शन रखना पड़ेगा कि जब मैं क्वेश्चन दे दिया ना, तो उधर से कोई बोल रहा है वो सुनाई ही ना दे. है ना ऐसा ऑप्शन? मैं वही ऑप्शन एक्टिवेट करवा देता हूँ. फिर लोग अटेम्प्ट करेंगे शांति से. फिर जब मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ तब ऑन होगा माइक, तब जिसको जो बोलना है वो बोल भी लेगा. Means the kind of discussion is necessary. That will create less disturbance. ऐसे क्या हो रहा है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हो, पीछे से कोई आंसर दे रहा है, तो कुछ बच्चे मैंने देखा है गिव अप कर रहे हैं. They are trying further. That's bad. Sir, Yes. is the answer 14? गया. आवाज आ रही है तुम्हारे तक? मैंने बोला है ना आंसर नहीं बोलना है, चुपचाप बैठे रहना है. आंसर बोलने से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं. Okay, sir. क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आंसर बार बार बोलते हैं लोग. तुम कर लिया सॉल्व? तुमने किया? यहाँ भी आया. करो. राइट. तुमने क्यों? ट्राई करो. सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कॉमन टर्म. ठीक है. उसके बाद ये समझ लीजिएगा the common terms into their own, and that will be sufficient for anybody. The common terms will form an AP. Will form an AP. The
common difference with common difference equal to LCM of D1 comma D2. D1 is the common difference of this, D2 is the common difference of this. सही है? ठीक है? Now एक प्रॉब्लम क्या फेस करते लोग? ध्यान से सुनिएगा. इसमें हम जो लास्ट टर्म कंसीडर कर रहे हैं दैट इज 407 एंड इसमें जो लास्ट टर्म कंसीडर कर रहे हैं वो 709 है. तो कुछ भी हो जाए जो कॉमन टर्म होगा ना, कॉमन टर्म वो इसको नहीं क्रॉस करेगा, हाईएस्ट कॉमन टर्म. सही है? So by observation we will find the first common term that will act as the first term of this AP. सही है? And then we will target Tn less than 407 because we know the common difference. So solving this inequality Tn less than 407 will give me n less than something. मान लिया आंसर 48 point something. Answer will be 48. सही. हमने जीपी के बारे में भी काफी बात किया था, आपको अगर याद हो तो. मैंने जीपी के बारे में बताया था कि व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर, ए आर AR स्क्वायर AR क्यूब AR raised to n-1. Then I was talking about taking 3 terms, taking 4 terms in symmetric manner if required. ऐसा नहीं कि हर जगह वही करते. मान लिया AR स्क्वायर लिया तो इससे भी अपना बहुत जगह काम चलेगा. But sometimes maybe that you'll need something like this, A upon R, A R. ठीक है? And then मैंने बात किया था about sum of n terms. That was A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. Then I talked about sum of infinitely many terms, which is A upon 1 minus R, provided mod R is less than 1. Mod R is less than 1. You cannot go for finding the limiting value of infinitely many terms, the sum, if mod R is not less than 1. Because that sum will not exist, will become an infinitely large quantity there. ठीक है? It will not be a finite quantity. ठीक है? समझ आ रहा है? ये बताया था मैंने. AP के बारे में याद है, हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको बताए थे, like if you add same quantity to all the terms, the resulting sequence will again be an AP. Right? If we subtract same quantity from all the terms, the resulting sequence is again an AP. Now this was provided A, B, C, D are in AP. ऐसा नहीं कि पहले से मालूम नहीं है और फिर कुछ किया जा रहा है. This is in AP. तो मैंने बहुत सारे properties बताए थे कि if we add same quantity to all the terms, if we subtract same quantity from all the terms, if we multiply all the quantities by same quantity, if we divide all the terms by same quantity, तो क्या बनेगा? फिर से AP बनेगा. In similar manner हम GP में भी कुछ सोच सकते हैं. सही है? Now you quickly realize कि अगर properties of GP, you will quickly realize कि consider A, B, C, D in GP. मैं ये बोल रहा हूँ बार बार कि you will quickly realize कि अगर एक फिक्स क्वांटिटी ऐड किया यहाँ पे तो you will not get a GP. मे भी किसी कोइंसिडेंस से हो जाए किसी पार्टिकुलर केस के लिए, but not in general, not always. सही है? उसी तरह मान लिया एक क्वांटिटी सारे टर्म्स से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, से 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो there is no guarantee कि फिर से GP मिलेगा. But if we multiply same quantity to all the terms, और if we divide all the terms by same quantity, तो क्या बनेगा? GP बनेगा. ठीक है? If
all the terms are multiplied by k, मान लिया k, the resulting सही है, if all the terms are divided by k, the resulting sequence will again be CP. Same. आप सबने थोड़ा थोड़ा लॉगरिथम के बारे में Sir, please wait. ये तो रिवीजन था, मैं केवल ये मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं तो चलेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, रुक जाते लोग। तो तुम कौन से स्कूल में? लक्षिता सर ए का डोमेन क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी नॉन जीरो ले लेना। ओके सर। आप सब लॉग के बारे में बेसिक्स जानते हैं क्या? बेसिक्स मींस व्हाट इज लॉग, यू नो एट लीस्ट, राइट? Yes, sir. पावर सो इफ यू नो लॉग तो हम ऐसा बोलते हैं एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। एक चीज पहले एपी से रिलेट करता हूँ तो आपको ज्यादा फील आएगा। मान लिया कि एपी है, पहले से एक स्टैंडर्ड एपी लिया, इससे अच्छा और एपी क्या हो सकता है? मतलब रैंडमली कोई एपी लेना हुआ तो ये बहुत ही अच्छा एपी। इसमें क्या किया, वी आर सेलेक्टिंग टर्म्स एट इक्वल गैप। यू विल ऑब्जर्व द सीक्वेंस इज एन एपी। यस, जस्ट पिक आउट टर्म्स एट इक्वल गैप। उस गैप को नहीं आप तोड़ सकते। See, the gap can be 1, the gap can be 2, gap can be 3. But एक बार gap 3 ले लिया तो फिर से 3 gap ही मेंटेन करना है। तो क्या मिलेगा? AP मिलेगा। GP में भी ऐसा होल्ड करेगा, ठीक है? You can try it. अभी तक में तो फील आ गया होगा इतना। If terms are picked at equal interval from a GP, they will also form a सही है? If terms are picked at equal gap from a given GP, they will also form a GP. सही है? If A, B, C, D are in GP, then log A, log B, log C are in AP and vice versa.
यू रियलाइज इट क्विकली अगर आपको थोड़ा भी लॉग आता है तो, और जैसा आप बोल रहे हैं आपको लॉग आता है, दोनों लॉग को बाद में फिलहाल याद कर लिया, करिए, नोट करिए। और भी टर्म्स लिखता हूँ, आई मीन और भी प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। Sir, what is log? अब अभी के लिए बस समझ लिया वो लॉग है, लॉग नहीं है, लॉग है ना। उसको अभी के लिए इग्नोर किया, इग्नोर। पर ध्यान रखिएगा ये जो मैंने लिखा है ना, ए बी सी डी आर इन जी पी, देन लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन ए पी, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी सी डी वगैरह अपन ले रहे हैं ना, वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल्स, क्या सही है। एक और बहुत इजी है सोचना, if all the terms of a GP are raised to same power, then they will form a ठीक है। ये याद कर लीजिएगा आगे के लिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में भी काम आता है। ए बी सी इन ए पी, सर हाँ सर मुझे ना लॉग में एक डाउट है सर, क्या आप वो क्लियर कर सकते हैं? हाँ, क्या डाउट है बोलो। Sir, if log p upon 2 is equal to log q upon 4 is equal to log r upon 8, लॉग P upon 4. log p upon 2 2. Sorry. is equal to log q upon 4 is equal to log r upon 8 ठीक है, is equal to k. इज इक्वल टू के। क्वेश्चन में हिंट दे दिया है, और बोलो। क्वेश्चन में बहुत बड़ा हिंट दे दिया। And pqr and pqr is equal to 100. 100। Yes, 100। 100. हाँ ठीक है। Then k is equal to So,
करते हैं, ट्राई करते हैं। आप सब ट्राई करिए एक बार। सर log p equal to 2 हाँ। हम तो साफ देख पा रहे हैं कि इस रिलेशन से तुरंत log p इक्वल टू लिखा, log q लिखा 4k और log r लिखा 8k। सही है। यहाँ से कैन आई राइट p इक्वल टू 10 raised to 2k, can I write q equal to 10 raised to 4k, and can I write r equal to 10 raised to 8k. Therefore, pqr is equal to 100 is equal to 10 raised to 2 implies 10 raised to 2k plus 4k plus 8k is equal to 10 raised to 2. This implies 4 to 8 8 16। हाँ दिख रहा है क्या? 16k is 2, k is Sir, 2 plus 4 plus 8 is 14. हाँ सॉरी 8 से 14 सही बात 16 plus 8 k is 2 by 14 1 by 7। अच्छा एपी में एक टर्म एक प्रॉपर्टी याद है आपको? हमने एपी में समेशन उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे निकाला था कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। सम ऑफ टर्म्स equidistant from beginning and end is same, means you take the first term from beginning, first term from end, add them. You take the second term from beginning, second term from end, add them, you will get the same value. In GP, if you multiply the terms equidistant from beginning and end, you will get the same quantity. ठीक है? सर एक क्वेश्चन है। एक सेकंड। The product of terms equidistant from सही है। अगर किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा है तो आपको लगता है वो आपके लाभ का है तो आप नोट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी अभी बताऊंगा मैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। If A1, A2, A3 are in GP, B1, B2, B3 are also in GP, सही है? Then A1, B1, A2, B2, A3, B3 are also in GP. A1 by B1, A2 by B2, A3 by B3 are also in GP. This is less than equal to 0. Then
A, B, C, D are in AP, GP, HP, none of them. आपके लिए तो दो ही ऑप्शन है AP, GP. आपके लिए तो दो ही ऑप्शन है AP, GP. अब ये मत बोलना we are learning about GP, so answer is GP. है ना? ऐसा जरूरी नहीं है. AP भी हम सीख चुके हैं. और एक ऑप्शन none of these भी. सर आप वो सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या प्लीज? खुद से ट्राई करो. मैं सर वो द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वल. चलो एक अच्छा जीपी लेते हैं. 1 2 4 8 16 32. 32 into 1 is same as 16 into 2 is same as 4 into 8. ओके सर, थैंक यू. Exceeds twice the and the sum of left and middle digit is 2/3. आपने बहुत सही से इसको देखा नहीं है. जिसने भी Sir, is the second question answer 1 to 4? No. All you are getting 1 to 4. Is 1 to 4 satisfying all the properties mentioned? You can cross check. See, try to understand this scenario. This is A square, B square. सही है? सही है? We have. Sir, is the second answer 137? No. अरे भाई वो जीपी में होना चाहिए. 137 GP है ही नहीं. किसने बोला ये आंसर? सर बोरीवली में किसी ने. 139 हो सकता है. 137 कैसे होगा भाई? आराम से अपना पे नियंत्रण रखो. क्या पता कैलकुलेशन एरर किया होगा. देखो ध्यान से. कोई बात नहीं. देखो लुक एट दिस. ये काफी कॉम्प्लेक्स लुकिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर्स ढूंढने बैठेंगे Sir, is the second question answer 469? शायद सही है. Plus 9 is 469. 4 का 3/2 times is 6 and 6 का 3/2 times is 9. So that is GP exactly. सर लेकिन दूसरी कंडीशन. हाँ तो कर देगा ना. कंडीशन चाहिए. 9 plus 4 क्या आएगा? 13. 13 is 2 times 6 plus 1. सही तो है? सही है? 13 is 2 times 6 plus 1 जैसा लिखा है. And आगे क्या लिखा है? Sum of left and middle digit 10 is 2/3 of sum of middle and right. सही बात है? 15 का 2/3 is 10. Perfect. थोड़ा सा अगर
प्लेन ट्रायल इंसान तो भी कर सकता है, कायदे से हम समझाएंगे आपको। पहले इस पे ध्यान देते हैं। दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज 2, देख रहे हैं क्या, -2 AP into B, ऐसे बोल सकते हो। सो वी आर गेटिंग AP माइनस, सही है। तो क्लू मिल गया होगा लोगों को। सिमिलरली वी कैन हैव, बोलिए, p square minus 2PBC VP minus B square. नहीं b square BP माइनस C Sorry, C square. है ना, प्लस VP minus CP माइनस, बोलिए, VP minus A square. D स्क्वायर। d square Now the sum of perfect squares is less than 0, not possible. So the only possibility is AP minus B square plus BP minus C square plus CP minus D square is equal to 0. Now if they are equal to 0, each one of them is 0. Therefore, AP minus B is equal to BP minus C is equal to CP minus D is equal to 0. Now out of all these, if you start picking P from here, P will be B by A. From here, P will be B by C. C by B. From here, P will be D by C. B by C. And this relation clearly reveals that ABC are in, ABCD are in GP. The ratio of B by A is same as C by B, same as D by C. So they are in GP. है ना? अब as far as this question is concerned, we'll start like this. Let the digits be A, AR and AR square. पहले ये वाला क्वेश्चन नोट करने दीजिए लोगों को। तो इसका मतलब जो अपना नंबर है n, वो अपना नंबर क्या होगा? सही है, दैट्स इट, लिख के रखा है इसे। उसके बाद क्या कंडीशन दिया है? सम ऑफ राइट एंड लेफ्ट। सो a प्लस AR स्क्वायर इज 2AR प्लस 1। इसको होल्ड पे रखा है क्योंकि इससे डायरेक्टली कुछ सोच पाना मुश्किल दिख रहा है ना? अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करेंगे। सम ऑफ लेफ्ट एंड मिडिल, सो A plus AR is 2/3, 2 by 3 times middle and right, so AR plus AR square. इसको बहुत ध्यान से देखा जाए तो we can take A common from both and A gets cancelled. समझ आ रहा है? After cancellation we will get 1 plus R is equal to 2 by 3 times R plus R square. इसको rearrange किया, क्या रीअरेंज किया, ये मिटाओ,
ठीक है ना, क्वेश्चन भी हटा देते हैं, सही बात है। इसको रीअरेंज करा तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस आर, सॉरी 3R. नहीं 3 प्लस 3r, yes, is equal to 2r plus 2r square. We'll rearrange it. 3 plus 2r square minus r minus 3 equal to 0. So yeah, we can solve this quadratic. We can solve this quadratic. We have r equal to 1 plus minus under root volume 1 1 square. plus 24 by 2 into 2. So we are getting 1 plus minus 5 by 4. So we are getting 6 by 4 comma minus 1, which is 3 by 2 comma minus 1. Now let's say r is minus 1. एक बार बोल देते हैं, बोलने में क्या जाता है, हालांकि प्रैक्टिकली दिख रहा है कि मुश्किल है, बट लेट्स से तो r को माइनस 1 लिया जाए फर्स्ट रिलेशन, तो क्या आएगा, a प्लस a 2. प्लस है ना इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 1. दिस विल गिव 4a इक्वल टू 1 and that makes a equal to 1 by 4, which is not possible. So we'll pick r equal to 3 by 2 and move ahead. 4, 6, 9 is correct. पॉसिबिलिटीज तब ज्यादा होती है ना जब r की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है. आगे लिखिए, we'll try some special type of series. This is called AGP, arithmetical geometric progression. Say it. Now see carefully. Let's say we have an AP, A plus D, A plus 2D, and so on up to A plus. Right. And let's say we have a GP. हो सकता है ना? If we multiply the corresponding terms, corresponding terms, we'll get an AGP, which will look like this: A comma A plus D R, A plus 2D into R square, A plus n minus 1d n minus 1D into R raised to n minus 1. सही है, बस क्या करें, ये माया है, ये सत्य है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जाम्पल क्या है, दुनिया में एग्जाम्पल भरे, खुद से सोचते जाओ। हाँ। बस AGP बन रहा है, ये कई बार हम देख के भी फील कर सकते हैं और कई बार तो मेंशन ही होता है क्वेश्चन में। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई उसमें AP पार्ट कौन है और GP पार्ट कौन है, क्योंकि AP पार्ट से कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और GP पार्ट से कॉमन रेशियो का आइडिया मिलेगा, राइट? ठीक है, समझ रहे आप? Now if we are targeting the sum of n terms, the sum of n terms, A plus BR plus A plus 2d
आर लिख ले रहा और क्या तो कितना बड़ा लिखूं लिख रहा है तो आराम से ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे यू शुड मेमोराइज दिस प्रोसीजर मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि चल क्या रहा है जो कॉमन रेशियो है ना जीपी पार्ट का आर will multiply both sides by r. We will multiply both sides by r. So we will be getting r into Sn. Now what is this? AR. But we will not write it here. We will write it here. Why? Because there is AR here and after subtraction that AR will be gone. Okay? AR plus A plus D R square plus A plus n minus 1 D R raised to n minus n. Now we will subtract. Okay? Subtract. So we will get 1 minus R into Sn is we are getting A plus DR. DR. DR cube. DR to the power. DR to the power n minus 1. ये जस्ट पहला टर्म क्या होगा यहाँ से पहला टर्म बिल्कुल सही सोच रहा हूँ a plus n minus 2 d r raised to n minus 1. So after subtraction we will get d times r raised to n minus 1. d times r raised to and this will be with minus sign. A plus n minus 1 d r raised to n. Now try to understand ये जो बन रहा है ये एक स्पेशल सीरीज है अपने आप में which is a GP. Which is a GP. Now you have to understand that this GP contains n minus 1 terms. ऐसा क्यों हुआ? आराम से देखिएगा. फर्स्ट टर्म से हमें AR मिला तो फर्स्ट टर्म का इंटरेक्शन होके फर्स्ट टर्म मिल रहा है यहाँ बट लास्ट टर्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना इसमें. So there are not n terms. It is a GP with n minus 1 terms. सर लेकिन वो एक उधर का भी तो गया क्या ये तरफ का. इससे मुझे क्या मतलब? ये dr कहाँ से आया आपको? यहाँ से. तो सीधी भाषा में आप ऐसे सोचो कि सेकंड टर्म से इंटरेक्ट हो क्या है? सेकंड टर्म से इंटरेक्ट हो क्या है? थर्ड से आया, लास्ट से आया, फर्स्ट से तो कुछ नहीं आया. सो देयर आर n minus 1 terms. अब इसको बहुत अच्छे से रीअरेंज अगर किया तो we can get 1 minus r times Sn is equal to A तो है ही, A अपने पास रिजर्व है प्लस dr कॉमन लिया फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? r. सही है. नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? सही है. That gives Sn equal to A upon 1 minus r plus dr into सही है.
ये याद नहीं करना है, you have to understand the procedure. ये याद करना सेहत के लिए सही नहीं है। बता रहा हूँ मैं, this is a warning. Now let's talk about S infinity, sum of infinitely many terms. Again, you can observe the sum of infinitely many terms will exist if and only if this R is a small quantity. है ना? Otherwise क्या होगा? If n tends to infinity and R is significantly large value, it will start tending to infinity. Or even if it starts tending to minus infinity, वो टेंशन दे देगा मुझे. It will not exist. So if mod R is less than 1, mod R is less than 1. तो ये तो complete product में, and if this term becomes 0, the complete term becomes 0. And if this term becomes 0, we get dr upon 1 minus r square. Therefore, S infinity will be a upon 1 minus r plus dr upon 1 minus r whole square, provided mod r is. सर ये आप याद रख कैंसिल सकते कैंसिल हाँ सर क्या कैंसिल? ए अगर आर 0 ले 0 के आसपास तो 1 माइनस 0 के आसपास होगा तो नीचे 1 बचेगा, फिर ए बना इतना रखेंगे, इतना भी उसको गरीब नहीं बना दिया। ना करो, इतनी गरीबी नहीं। R can be something like 1/3, 1/5. उसको गरीबों की तरह बनाएंगे तो आंसर पे significant difference ला देगा ना, है ना? हाँ, एक बार उधर से समझा ना, बोलो ना, नहीं समझा। कहाँ से नहीं समझा? यहाँ से? हाँ अरे कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया है। A is A, this is this, and this is a GP. The first term dr. What is the sum of GP? A into 1 minus common ratio raised to number of terms upon 1 minus common ratio. This is the formula that we taught you last time. सर मैं ऑप्शन जो GP होता है ना, GP वो ऐसा दिखता है, देखो AR square. This is called first term and this R is called common ratio. You can see this term upon this term is same as this term upon this term, and that is R. ठीक है? इसमें Sn, sum of n terms, is given by A into 1 minus R raised to number of terms upon 1 minus R. तो आप देख रहे हैं ये जो ब्रैकेट है ये GP है. The first term is dr. तो हमने वही लिखा. सही है? And the number of terms is not n, it is n minus 1. ये हमने explain किया आपको. So you can understand it here. पढ़ चुका है? अच्छी बात. कब पढ़ा था? LKG में? नहीं सर आप यहाँ बताए ना और करूँगी तो वो बड़ी बात ब्रेक 5:45 को. चलिए क्वेश्चन लिखिए. Let me see how many of you could identify this event. आते नहीं, आपको टाइम पास गए. सर आपको स्टडी बेसन का क्या बोले? आप कुछ करते रहे तो हम क्या करें? मैं नोट करने का टाइम दिया था, समझने का, बातें करने का. तो समझिए तो सर आप अब प्रश्न करते हैं. प्रश्न. Find sum of n terms. Find sum of
n terms. So that find sum of n terms of the series. Three plus 5 into 1 by 4 plus 7 into 1 upon 4 square. If sum of 2 infinitely, आपको आंसर एज अ फंक्शन ऑफ n बताना है, जिसमें की जरूरत पड़ने पे n को 50 पुट किया तो 50 के लिए आंसर देगा, 100 किया तो 100 के लिए देगा. If sum of infinitely many terms of plus 5r plus 7r square is 44 by 9. Find r. Can I say 3, 5, 7? This is GP part, sorry AP part. 1, 1 by 4, 1 by 4 square. GP. This is GP part. मैंने क्या बोला था? AP से अपने को क्या मिलेगा? First term है common difference which is 2. Then GP से क्या मिलेगा? R. So if this is SN, 3 plus 5 by 4 plus 7 by 4 square and so on. We can say 1 by 4 SN is 3 by 4 plus 5 by 4 square and so on. सही है? आपको अगर NS टर्म लिखना है तो you can easily write it. हाँ? उसके बाद क्या किया? 1 minus 1 by 4, 3 by 4 times SN is equal to ये 3 आएगा और ये क्या आएगा 2 by 4, 2 by 4 square. देख रहे हैं आप? 2 by 4 square. In similar manner एक n-1 टर्म्स का क्या आ जाएगा GP. सही है? एंड जो लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग 1 by 4 मल्टीप्लाई होके आएगा वो आएगा माइनस के साथ. Same way that we derive the result and you will get the answer. ठीक है चलेगा. देखो ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था कि AP पार्ट क्या था 3, 5, 7 9. So what will be the nth term? 3 plus n minus 1 into 2. ये क्या था? 3 plus 2n minus 2 which is 2n plus 1. क्या आएगा? ऐसे भी देख के पता चल रहा है ना 3, 5, 7 a plus n minus 1 into d. देख लो सही है. तो 3 plus 2n minus 2 which is 2n plus 1. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट टर्म प्लस और ये सर 2n plus क्या 2n plus 1 2n plus 1 over upon 4n minus 1 4 raised to n minus 1. 1. Yes. सही है. और फिर पूरे उसके सम के लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2n plus 1 upon 4 raised to n. सही है. बस इसी को मैनिपुलेट करना और कुछ नहीं.
3/4 times Sn is equal to 3 प्लस ये जो ब्रैकेट है इसमें पहला टर्म क्या है 2/4 which is Gp 1 minus R कितना है Gp का 1/4 so 1 minus 1/4 सही है 1/4 पे क्या पावर लेंगे n minus 1 क्या पावर लेंगे n minus 1 की पावर तो हमेशा वही होती है समझ आ रहा है अपॉन 1 minus 1/4 माइनस ये लिखेंगे 2n plus 1 अपॉन 4 raised to n सही है अब सिंप्लीफाई कर लेना अब मत बोलना कि आगे भी करके देखिए थोड़ा ज़्यादा बना लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस मैंने आपको क्या सिखाया था अभी s इन्फिनिटी क्या होता है a अपॉन 1 minus r प्लस dr अपॉन 1 minus r का होल स्क्वायर सिखाया या नहीं सिखाया so can I write on this basis इसमें भी AP पार्ट पहचाना तो क्या आता है 3 5 7 ये आता है और GP पार्ट क्या आता है 1 r square so what is A 3 what is D 2 आया ना this is A and R is R is to find करना सही है this is given to be 44/9 ये तो given है so 3 upon 1 minus r plus 2r upon 1 minus r का whole square is 44/9 सही 1 minus r LCM लिया सही है 1 minus r स्क्वायर ले लो ना so 3 times 1 minus r plus 2r is equal to 44/9 सही है आया now this becomes 3 minus 3r plus 2r which is 3 minus r 3 minus r into 9 is equal to is equal to 44 times 1 minus r का whole square rearrange and solve the quadratic accept the value of r which belongs to -1 to 1 as mod r must be less than 1 for s infinity to exist. So what we will do finally, we will not accept any value that is outside -1 and 1. Say must lie in this interval. Just rearrange this and solve the quadratic. देख लो कुछ खास नहीं था सर बट अगर mod r लेस देन 1 चाहिए तो फिर 1 कैसे आ सकता मैंने 1 पे ओपन लिया है क्लोज नहीं लिया अगर एग्जैक्ट 1 दिया है तो we will reject it we will बाबा लड़ाई करेगा बोरीवली सेंटर पे अगले बेंच पे मुझे दिख रहा है कौन बैठा है और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि उसका फेवरेट काम है गॉसिप इन द क्लास नहीं वो उसको क्लास लगता है गॉसिप क्लब मैं उसको पहचानता हूँ करते हो लोग हाँ वो ये वेडनेसडे को मैं उधर गया था बहुत मजा आया। हाँ वो आता ही है क्लास बातें करने उसको लगता है दिन भर मुंह बांध के रखा जाता है तो अभी क्या है अभी थोड़ा छूट मिलती है ना अभिव्यक्ति की आज़ादी 3 घंटे के वो लिए बोलता है क्लास में बोलता ही रहता है एक और है इसी तरह बोलने वाला आज पता नहीं आया नहीं लगता क्या नाम है सर पता नहीं ऐसे लोगों के नाम याद रखता हूँ मैं ऐसे लोगों के नाम वाम नहीं याद रखता मैं ऐसे लोगों के तब क्या वो क्या चेहरे से ध्यान आ जाता है ना कि क्लास में यही था जो बैठ के टाइम पास करता रहता है तो बस ध्यान आ गया ये तो वही है मेमोरी
कुछ नई बात करेंगे, ये मिटाओ, सर जल्दी नोट करिए। छह ही चीजें, पांच ही चीजें। मिटाओ, हाँ सर। enough। चलो अब देखो, I am going to introduce you about something called sigma notation. मैम ने बताया। नहीं मतलब बताया गया होगा, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था कि आपको क्या आता है। This is how we represent the sigma notation. इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो मान लिया मैंने यहाँ कुछ लिखा है, मान लिया मैंने लिखा AR, क्या लिखा AR। तो ये लिखने का मेरा मकसद ये है कि AR is a function of R, AR is a function of R, so R keeps on varying, है ना। R सर is the यार varying- मतलब 8 times R नहीं? No, A times R नहीं, it's just a symbolic representation that AR can be R plus R square also. ये अपने आप में ये मैथमेटिकल फंक्शन होगा, फॉर्मूला होगा in terms of R, समझ रहे आप? तो हम तो बस उसको लिख रहे हैं, that is not A into R, that R is used just as a suffix, समझ आ रहा है? जैसे अपन किसी सीरीज के लिए ऐसे यूज करते हैं ना, टर्म 1, टर्म 2, तो जनरली क्या बोलते हैं AR, सही है। उसी तरह मैंने यूज किया AR, सही है। तो यहाँ पे R will be the variable, R equal to 1 to n, and you can write R equal to 1 to 2n, आपकी मर्जी। आप लिख सकते हैं R equal to 10 to 100, कोई दिक्कत नहीं है। So it's the point where R will decide, it's the point where R will end. Now what is the meaning of this notation? It will denote continued summation. सही है? And by this we mean A1 plus A2 plus A3 up to AN. हाँ सर। सही है? सही है? समझ आ गया? Now if there is something like this, AR plus minus BR, ठीक है? We can split it like this, sigma AR plus minus sigma BR, ठीक है? Suppose there is sigma K times AR. Now this K is not a function of R, समझ रहे हैं आप? K is not a अलग से function of R. So K is constant with respect to R. K is constant with respect to R. We can throw K outside. So it becomes K times sigma R is equal to 1 to n AR. K फिर ब्रैकेट AR यहाँ पे ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाला तो चलता है, अंडरस्टूड, ठीक है? क्लियर? मान लिया there is sigma K, समझा? बस K लिखा है, बट वो K क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल R है। इसका मतलब आप क्या लिख रहे हैं? K plus K R n times. So it is going to be Kn. It is going to be Kn. Clear? Now, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मान लीजिए कॉपी करेंगे के लिए वक्त देंगे ना, काम की बात नहीं बता रहा। मान लीजिए
सीरीज में बहुत सारे टर्म्स लिख रखे हैं एंड वी वांट टू ऐड देम. हो सकता है इट विल बी अ वेरी हेक्टिक टास्क, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर द टर्म्स. सपोज द जनरल फार्मूला इज 2n plus 1. तो टू फाइंड Sn we can write sigma Tn. सही है. और ये ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाते लोग इफ आई राइट लाइक दिस. मैं बताता हूँ. मान लिया जनरल टर्म इज 2r plus 1. क्या है? तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या होगा? सिग्मा Tr. और क्या? सम मतलब सारे टर्म्स का एडिशन है. सारे टर्म्स का एडिशन है. T1, T2, T3 सबका. तो आप लिखते हो सिग्मा Tr. इसका मतलब क्या हुआ? T1 plus T2 plus T3 up to Tn. Now if we have a formula for Tr, for example 2r plus 1, just for explanation around it. So I'll be in a position to write like this. Right? Now we can apply sigma notation का property and we can split it. 2 times sigma r plus sigma 1. I and r. ये एक स्टैंडर्ड समेशन है. मैं इस तरह के 3-4 फॉर्मूले दिखाने वाला हूँ एंड ये भी स्टैंडर्ड है. क्यों? अभी सिखाना सिग्मा के का मतलब क्या होगा? k into n. तो सिग्मा 1 का मतलब क्या होगा? 1 into n. उधर r into n. सही है? सही है ना? तो देखिएगा सिग्मा r is equal to 1 to n. Memorize. Is n into n plus 1 by 2. Sigma r square r is equal to 1 to n is given by n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. What is this practically? Sum of first n natural numbers. What is this practically? Sum of squares of first n natural numbers. सही है? Sigma r cube r is equal to 1 to n is going to be n into n plus 1 by 2 ka whole square, and coincidentally it is sigma r is equal to 1 to n ka whole square. This is just a coincidence and you can easily observe it. Note करिए. हाँ, वो तो एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए. क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें आपको कभी कभी ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज टीआर. समटाइम्स वी विल बी एबल टू फाइंड टीआर बाय ऑब्जर्वेशन हिट एंड ट्रायल, एंड समटाइम्स उसके लिए भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके थ्रू टीआर मिलेगा. टीआर मिल जाएगा देन वी विल अप्लाई एसएन इक्वल टू सिग्मा टीआर. सही है? मुझे क्लियर हो? हाँ Good, very good. Now, हाँ सर. we'll do some simple questions based on this, and then we'll move to different types. एक टेलीस्कोपिक सम होता है वो भी सीखेंगे हम. चलिए सॉल्व एग्जांपल करते हैं दोस्तों. इलस्ट्रेशन देखो.
3 terms. जस्ट एक और नोट कर लीजिएगा इसमें, सिग्मा r minus 1 r is equal to 1 to n. ये क्या दे रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. क्या दे रहा है? ऑड नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers and this will give n square. वेरीफाई कर लेना. ये भी याद रखना तो अच्छा रहेगा. देखिए, if we are trying to find S50 will go like this, sigma r square r is equal to 1 to 50. सही है? Plus 3 times sigma r is equal to 1 to 50 minus sigma 1 r is equal to 1 to 50. अब इस वाले में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे. By putting n equal to 50 जाएगा 50 into 51 into 101. ओके सर. upon 6 कैंसिलेशन. देखेंगे. Plus 3 times 50 into 51 by 2 minus 50. Don't tell me to do it, please. राम करिए. Don't ask me to do such tedious task. यहाँ पे the challenge that you are facing is you don't have TR. You don't have TR. You don't know TR. सही है? So we will observe what kind of terms the series is having. Sir, 1 upon 1, 3 square by 2 square. 8 9. The numerator is sum of first n natural numbers का cube. Can I say if I take TR, it is going to be 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to R cube upon sum of first R odd natural numbers. upon all. सही है? So TR is R into R plus 1 by 2 का whole square हाँ हाँ. upon R square. हाँ. कोई भी टर्म लिया, T50 लिया, न्यूमरेटर कैसा नजर आएगा? 1 क्यूब plus 2 क्यूब up to 50 क्यूब. 16 है सर. अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ. सर नहीं समझा वापस टीआर वापस समझा दूंगा ना. थर्ड टर्म में क्या नजारा दिख रहा है आपको? 3 क्यूब. Up to 3 क्यूब. हाँ और डिनोमिनेटर इज सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स. हाँ तो इसका मतलब rth टर्म में कैसा हो रहा होगा? Up फर्स्ट to r cube हाँ and denominator will be sum of first r odd natural numbers. हाँ So the numerator is ये वाला फार्मूला, n की जगह r लेंगे हाँ and denominator is r square. This is r square cancels. R square plus 2r plus 1 upon 4. सही है? So we have Sn या S16 equal to sigma tr. R is equal to 1 to 16. This will give 1 upon 4 times 1 upon 4 पहले बाहर रखेंगे ना tr से. Sigma r square plus 2 times sigma r plus sigma 1
R is equal to 1 to 16. R is equal to 1 to 16. R is equal to 1 to 16. That's it. काफी आइडिया मिल गया होगा इससे. We'll take some different types of example now. और ये नोट कर लीजिए. ठीक है, नोट कर लिया सबने? होपफुली सो. लोग आराम से रिलैक्स कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ दिमाग लगाओ, दिमाग सर लगाओ. इसमें न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट आर क्यूब्स. The general term has its numerator as sum of cubes of first r natural numbers. सही है? डाउट है ये? किसी को डाउट है? सर एसी बंद कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं. क्या हिमालय बन गया था? हमारे से भी अच्छा था। और वहाँ से बस बारिश का मौसम है, जल्दी ठंडा होता है. एक और काम की बात नोट करिएगा एंड यू कैन इजीली रियलाइज. मान लिया एक सीरीज में ये टर्म्स है T1, T2, T3 है ना, अप टू Tn. तो Sn का मतलब क्या होगा? सम ऑफ ऑल दीज. आया ना? अब मान लिया मुझे Tn एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ Sn. तो कुछ ऐसा, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन में Sn दे रखा होगा एंड आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज T5. दैट विल मेक इट रियली डिफिकल्ट फॉर यू. सर लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स से नहीं, ओनली Sn दिया होगा. Sn एंड आपसे क्या पूछा जाएगा? फाइंड T5. अब देखो T5 अगर मुझे फाइंड करना है आई शुड टारगेट Tn. आई शुड टारगेट. अच्छा, Tn से जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा? Tn Tn -1. तो यहाँ तक का सम क्या देगा? Sn minus Tn. This implies Tn is Sn minus Sn -1 holds for any series. इससे क्या फायदा है? If we have Sn, we can find Tn and we can find T5, T10, whatever. Suppose Sn is n cube plus 3 by 5. Sn -1 can be obtained by replacing n with n -1. Now we'll get Tn like Sn minus Sn -1. And now we can find any particular term. And in this manner हम कभी-कभी नेचर ऑफ द सीरीज पे भी कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि नेचर ऑफ द सीरीज पे कमेंट करने के लिए Tn मिलने से ज़्यादा आसान होता है. समझ रहे हैं आप? तो मतलब Tn मतलब तो जो काइंड टर्म क्या है वही. Tn means nth term. या अब एक बात और नोट कर लीजिएगा आप ध्यान से. in an AP Tn is a linear polynomial of n. क्या?
linear polynomial of लीनियर इक्वेशन ये फॉर्म में इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल in an AP and vice versa. Means if it is a linear in N, the series has to be AP. समझ रहा? सर linear polynomial in N मतलब अब बताता हूँ. And vice versa. Means if your SN is a quadratic in N, सर quadratic equation नहीं, there is a difference between polynomial and polynomial equation. A quadratic expression in X can be written like this. A linear expression in X can be written like this. A linear expression in N can be written like this. A quadratic expression in N can be written like this. काम की बात है कि ये वेरिएबल है. अगर an लिखा है linear polynomial in N तो वो होगा an plus b. या दिस टाइप सही. और आप ट्राई करके देख लो, आपके मन में तसल्ली ना मिले आप ट्राई करके देख लीजिए. आपको बार बार एक ही ना मिले तो बताना. नोट इट. क्या हंस रहा है? वो देखो देखो क्या कर रहे हैं. क्या हुआ भाई? परेशानी? टेंशन? चेंबूर सेंटर. अरे अपना काम करो. क्या हंस रहे तुम लोग? नोट करने बोला नोट करो, अगला क्वेश्चन करें आप. सर हो गया. हाँ. देखो वो अभी तक नोट कर रहा है. तो उसको करना है. अरे हम क्या कर सकते हैं? तुम बातें करो. तुम सीधा करो. ठीक है. Like 3 plus 7 plus 14 is 24. 7 plus 14 plus 24. Sir, a boy is telling. क्या बोल रहा है? पता नहीं सर. Sir, a boy in something. हाँ सर. A boy in बाद में पता नहीं क्या बोला. भाई क्वेश्चन करो यार. यही तो कैच.
ये तो ऑब्जर्वेशन है यार जो यूजफुल होने वाला है. क्या The difference हुई? difference of the terms is in AP. The difference of the terms is in GP. ऐसा होने से बहुत आसानी से हम TN फाइंड कर सकते हैं. एक बार TN फाइंड कर लिया तो SN फाइंड कर सकते हैं. समझिएगा. सपोज वी राइट SN here. कैसे लिखेंगे? 3 plus 7 plus 14 plus 24 plus 37 plus TN minus 1 plus TN. कोई डाउट? SN को वापस लिखा लेकिन डिस्प्लेस कर. plus 10 Yes. plus 21. Because I am targeting TN. Subtract here 0 equal to 3 plus सर लेकिन उधर कुछ तो आएगा ना. 0 है ना. नहीं ऐसे Subtract here. हाँ कैसे We are getting 0. 4 plus 7 7 plus 10 plus 13 16 up to n minus 1 terms. समझ रहे हैं आप? Minus TN. Now, TN को वो बाजू yes, TN is equals to 3 plus. Find sum of this AP up to n minus 1 terms. तो क्या होता है वो? सर 1 ब्रैकेट n by 2, n minus 1 by 2 हाँ into 2a, 2 into 4 plus n minus 1. It will be n minus 2 हाँ into d. क्या हाँ 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 इस पे सही है. TN मिल गया. TN मिल गया. Apply SN is sigma TN. Now apply SN is sigma TN. सर वो लास्ट में क्या लिखा है 2 सेकंड आए लास्ट में इधर इधर नीचे है यहाँ नीचे नीचे AP का फॉर्मूला लगा है. नहीं वो लास्ट में वो 3 लिखा है कि वो ब्रैकेट है नहीं 3 है. दुनिया में रहता है. कुछ भी भूल जाता है. क्या? देखो AP का सम का फॉर्मूला बताता हूँ मैं. If the AP is A plus D, A plus 2D. This is called first term. This is called common difference. SN is given by n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, which is also n by 2 into first term plus nth term. सर उधर 3 क्यों आया सर फर्स्ट टर्म तो ए है ना. Common difference क्या दिख रहा है? 3 And what is the first term? 4. That's what I have done. नहीं सर आपने उधर बोला कि विच इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म 2a कैसे आएगा? ए आएगा. फर्स्ट टर्म a आएगा और लास्ट टर्म आएगा a plus n minus 1 into d. तो
2a को split किया a plus this, so this is first term, this is last term. ये क्वेश्चन से अलग पार्ट क्या? हाँ, of course. ये तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझ नहीं रहा है, शायद आया नहीं था. आंसर में एब्सेंट था। तो in similar manner, आप ये समझ गए होंगे आप कि if we have the difference as a GP, then also we can easily find TN and we can move to find SN. आपको ये ट्रेंड ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो डिफरेंस ऑफ टर्म्स है वो AP फॉर्म कर रहा है या GP फॉर्म कर रहा है. The procedure is going to be same. Easy? सर और अगर जीपी होता तो क्या फॉर्मूला होता सर? जीपी का फॉर्मूला जो जीपी का उधर आएगा एक होता है मेथड ऑफ डिफरेंस. वो कैसे वर्क करता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. ये भी मेथड ऑफ डिफरेंस का ही एग्जांपल था, ठीक है. और मेथड ऑफ डिफरेंस में और भी स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होंगे, मैं लेके आपको बताता हूँ. आई मीन वो एक पार्टिकुलर पैटर्न है, बस उसका ध्यान रखना है आपको, एंड यू विल ऑलवेज बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो इस पे हम और अच्छे अच्छे एग्जांपल ले सकते हैं. पर फिलहाल मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ. और कई लोग इसको ईएन मेथड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैं लिखता हूँ. नाम मान लीजिए TR is 1 upon R into R plus 1. So we can do some work here. We can observe that the difference between these two terms is 1. So numerator is already 1. I can write the numerator like this. And if you split it along the negative, you will be getting 1 upon R minus 1 upon R plus 1. So we have T1 equal to 1 upon 1 minus 1 upon 2. What is T2? 1 upon 2 minus 1 upon 3. What is T3? 1 upon 3 minus 1 upon 4. And in this manner, Tn will be 1 upon n minus 1 upon n plus 1. This is called telescopic sum. क्या बोलते हैं? टेलीस्कोपिक And it will start cancelling like this. where 1 minus 1 सही है? Upon adding we get Sn is equal to यहाँ से 1 यहाँ से 1 minus 1 upon n plus 1. सही है? In this series, if you say what is S infinity will be 1 because 1 upon n plus 1 will tend to 0. When n is very huge quantity, 1 upon n plus 1 will also n plus 1 will also be a huge quantity, and hence 1 upon n plus 1 will be almost 0. सही? For example, this was an example containing only 2 terms. Now we will move to 3 terms. R into R Suppose plus 1 TR into R is plus 1 upon R into R plus 1 into R plus 2. काम की बात, ये AP में लग रहा है. एक देखिए मिसिंग टर्म्स वाले भी केसेस बनेंगे, लेकिन अभी आप वो समझेंगे नहीं, इसलिए उतना ले नहीं रहा हूँ मैं, बस बेसिक मेथड सीख रहे हैं. What we will do, we'll check the first term and last term difference, and that is coming to be 2. But 2 is not there. मल्टीप्लाई So we can write like this, 2TR is 2 upon this, which is R plus 2 minus R upon R into R plus 1 into R plus 2. If we split along this negative, we'll get 1 upon R into R plus 1
है ना, माइनस 1 अपॉन R plus 1 R plus 1 into R plus 2. सही है. Now start writing 2t1 क्या आएगा? 1 तो उसको upon further split में कैसे 1 करें? into 2 minus 1 upon split करने की जरूरत नहीं है further, मैं दिखा दूंगा आपको कैसे. 2 into 3 है ना. What is 2t2? 1 upon 2 into 3. minus 1 upon 2 3 into 4 सही है. What is 2t3? 1 upon 1 upon 3 into 4 minus 1 upon 4 into 5. सही है. And this way things will continue. as So third it will be 1 upon n into n plus 1 and into n plus 1 minus n plus 1 into n plus 1. सही है. Cancel. क्या होगा? सर सब कैंसिल This cancels. 1 plus So 1 we upon get 2 2 2 times Sn is equal to 1 1 by upon 2 minus 1 minus upon. 1 plus. सर n तो plus 1 into n plus 1 सही है. Hmm. So we get Sn equal to 1 1 upon minus 4 minus 1 upon हाँ 2 को बस सही है. हाँ negligible And we get S infinity equal to 1 upon 4. हम्म